Hi everyone, so we are going to see three important questions for today, and the very first question here talks about the ENACT partnership. Okay, now it's very, if you see in the UPSC Prelims examination, there always will find some environment related one-liners. That is very important. Okay, so now again, this one-liners are very difficult to find because in the newspaper it is not there. In your, what are the questions they are asking in the UPSC Prelims examination, in any monthly magazines it is not there. So there are some source which is beyond your reach. That's why Gold Tide is here, right? That's why we are here. What we do exactly is like बहुत सारा सर्च करना पड़ता है. It's a lot of research from, and see daily का, if you see my, it's a Gold Tide routine. If you see, we search all the environment websites, right? You just see UNEP, UNFCCC, then we have UNDP, then we have kind of IUCN, FAO, and there are many other down to earth. There are many environment related websites where the questions can be framed and they are important for your exam. Okay? So if you see the ENACT partnership, it says the United Nations launched the ENACT to promote the nature-based solution to address the climate change. Okay, so basically they have asking about who launched it. Convened. Yesterday मैंने आपको बताया था, right? Convened, who launched, right? So who launched this platform? दूसरा, it is a climate initiative under the European Green Deal. Okay, it is a initiative under the European Green Deal. Now, IUCN hosts ENACT's secretariat, which leads to the implementation of the partnership. So exactly this is about the who host the secretariat. Who host this secretariat? अब आप देखो यहाँ पे कि solution देखोगे तो answer is B 1 and 3. So definitely if you see here, the ENACT partnership works to accelerate. Now this was in news here. It works to accelerate the collective goal efforts to address the climate change, land and ecosystem degradation, and biodiversity loss through nature-based solution. Okay. Now, partnership was launched in the UNFCCC COP27 by the Egyptian COP presidency in collaboration with the IUCN. So UNFCCC plus IUCN, right? This is what. तो आंसर आपका 1 and 3 है. सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन ग्रीन डील. इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है, दैट इज करेक्ट. रिमेंबर दिस, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग, रिमेंबर दिस पार्ट एंड फिनिश द क्वेश्चन. इट इज एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन और आपका आएगा, न्यूज में भी है, राइट? अब आप देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंडिया, इंडियन कोस्ट गार्ड. Indian Coast Guard. Now, if you see here, first of all, Central Coordinating Authority in India for matters related to the oil spill. So, oil spill जो है in India, it's not kind of regulated or kind of the central authority is not the any ministry something. It's a Indian Coast Guard who is seeing the oil spill in India. Okay. Now, दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो, there is a contingency plan for the national oil spill disaster. NOSDCP brings together the resources of Indian government, state government, and oil industries. So it's a contingency plan which brings together the resources from all these things and try to regulate the oil spill in India, right? In the Indian seas, right? तो आप देखो यहाँ पे, as per the NOSDCP, oil pollution preparedness and response requirements are categorized into 3 tiers. Basically, this is a very difficult off-track typical UPSC type questions because you are not getting idea about anything. अगर आपने इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ा है तो it's fine. Otherwise, you have to skip such questions. They are kind of it becomes irrelevant in the examination when you don't know such statements and when such questions appear. ये थोड़ा सा off-track हो जाता है, बहुत difficult है, right? तो आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आप देखो यहाँ पे, एक्सेप्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर समथिंग लाइक, सेकंड स्टेटमेंट भी आप करेक्ट करोगे, राइट? एज पर योर बेसिक इंस्टिंक्ट. सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, प्रैक्टिस से ये चीज डेवलप होती है. सेकंड स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट एंड यू कैन मार्क इट करेक्ट एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन. इतना एक सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट यू शुड बी डूइंग करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंफ्यूजिंग. And third statement again
इट्स अ टिपिकल 3 आया, इट्स 3, 4, 5, यू डोंट नो, राइट? तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक है. अब कुछ ऑप्शंस इजी हैं तो हो जाएगा, बट इट्स ओनली वन, ओनली टू, इट्स अ डिफिकल्ट वन. सो इफ यू सी द सॉल्यूशन हियर, इट सेज इट्स अ इंडियन कोस्ट गार्ड इज द सेंट्रल coordinating authority. Okay, now national oil spill disaster contingency plan was promulgated by the coast guard, is the apex plan for the responding to the oil spill disaster in Indian waters. ठीक है, तो ये 1996 में हुआ था. इट्स नॉट न्यू थिंग, इट्स 1996, इट इज इन ऑपरेशन. समझ में आया? एंड इट्स अ 3 टायर, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सॉरी, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द दिस. आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़िए. सी क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली जितना ज्यादा हो सके वी विल ट्राई टू कवर. फिर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट? सो आप जितने भी ये टॉपर से सुनते हैं ना कि प्रीलिम्स इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, दिस एंड दैट, वो बहुत पढ़ाई करते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर नॉलेज, बहुत गेन करते हैं. इनफैक्ट आई कैन टेल यू विथ एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टूडेंट्स, राइट, जो भी क्वालिफाई किए हैं यूपीएससी, इधर इट इज रैंक 17 और रैंक 50 और रैंक काइंड ऑफ 432, 232 और जो बहुत सारे 3-4 और हैं, राइट? सो दे ऑल हैव, आई हैव सीन, दे हैव रियली गेन्ड लॉट ऑफ नॉलेज फॉर द प्रीलिम्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड ऑल. उसके बाद एग्जाम जाके थोड़ा सा इजी होता है, राइट? ना थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो, एसेट रिकवरी इंट्राजेंस नेटवर्क एशिया, ARIN-AP, एशिया पैसिफिक. ओके, सो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस. एंड दूसरा, it's a regional network focused on the improving the cooperation between the countries for the recovery of the asset involved in the financial crime and corruption. Again, the topic is very important. Financial crimes and corruption. This topic is very, very important. So definitely this become important, and it was in news also. Let me show you. India joins ARIN-AP steering committee to assume the presidency and host the annual general meeting in 2026. So India is a kind of a big party, big kind of major role in this ARIN-AP, right? तो आप देख लो यहाँ पे, it's established to facilitate the cross border collaboration on asset tracing, freezing and confiscation. ठीक है? It has 28 members and you see a members, India is one of the member. ऑब्जेक्टिव देखो, सब कुछ वेबसाइट से लिया है, सो देयर इज नो डाउट शुड बी देयर. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013. सो इट डजंट मैटर व्हेन बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड, इट इज इन न्यूज, तो यू हैव टू, राइट? तो ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया. सो ये आपको पता होना चाहिए फॉर एनी बॉडी रिलेटेड टू इंडिया. सो इतना आपको आज के लिए. दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर इज सी, बोथ आर करेक्ट, 1 and 2, right? So आज हमने देखा ARIN-AP. This is the third question. Answer is the second question. We talk about the oil spill, right? The answer to this question was C. All 3 were correct here. All 3 were correct here. Okay, all 3 were correct. And first question we talked about the B. Answer 2 and 3, 1 and 3, and the third statement was incorrect because it is not the part of the European Green Deal. So this is for the today. We'll see next important questions tomorrow.